Today is basically orientation class, and today we will see what are the things we are going to cover, what are the syllabus we are going to cover, and how to approach looking at the Srishti. You are from do ask. Yeah, sir, I'm from West Bengal, Kolkata, Okay. and I'm pursuing a bachelor's in economics under Okay. Calcutta. तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके कुछ लिखता हूँ क्या क्या हमें करना है, देन इट विल बी बेटर. So chalo, let's start 24 batch demo class, guys. So this is basically CUET PG 2024 batch, right? Class today's orientation class. It is the demo class kind of, you can think, and our target is to score high. As you see, two things: knowledge, as Ayush told, knowledge plus scoring high. In 23 batch, what happened? We started our batch in almost February or March, so there my target was scoring high somehow. But this time my first target is how to get knowledge, then score high, because till December or till January, I would say, yes, till January 2024, our main aim would be on knowledge. Okay, how to get knowledge first, because if you are knowledgeable, you can definitely score very high. And from January itself, we will start focusing on scoring high. अब scoring high and knowledge both are quite different things. Don't get confused with it. ठीक है? तो चलो, let me first share the things. Yes, this is the thing. So where we will get the course and all details. So first you have to download Navinomics app. App link is given below. I will give, and you can just go to the this Google Play and just search Navinomics. You will get the all classes, everything, all details there. And before even joining the class, I would say you watch first free demo lectures. Free demo lectures of 2023 I have already included in the study material sections. Here is the study material section. I am just showing you. Yes, if you download the app, so you will have a section like this. Here you can see that there will be a 3 layer. Okay, this section. Once you click here, you will have kind of thing: offline downloads, study material, free test, this, that. So click on study material. Once you click on study material, so many PDF are there and so many 23 lectures are there. So after watching few 23 lectures, you can judge whether you should join class or not. Now coming to the important things, what will be covering in CUET batch 24. Hope screen is visible to everyone. Can anyone reply? Am I yes, audible? Sir. Okay, thank you. Yes, sir. Audible. So this is the orientation of 24 batch. In 24 batch, we will be focusing mainly these things. तो फर्स्ट वी विल बी फोकसिंग कि एवरी टॉपिक ऑफ CUET PG इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो जाए. यहाँ हमारे पास सिलेबस है. आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग कि विच टॉपिक ऑफ पोर्सन, विच सिलेबस के कौन कौन के पोर्सन को किस बुक से कवर किया जाए, टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, एंड फ्रॉम विच बुक्स, फ्रॉम विच मटेरियल्स यू हैव टू कवर. आई विल बी शेयरिंग, नो नीड टू वरी. ओके, तो फर्स्ट वी विल बी कवरिंग, आवर मेन टारगेट विल बी कि बाय December or January somehow finish the syllabus. Trust me, we can do it. Maximum by January we will finish the syllabus, and last 4 months we will do practice plus revision. तो first our syllabus will be covered, each and everything will be covered. और जितने भी टॉपिक हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स रिटन इन द सिलेबस, यू विल बी प्रोवाइडेड ऑल हैंड रिटन क्वालिटी नोटमेट्स. दिस डज नॉट मीन कि हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया गूगल से, विकीपीडिया से, चैट GPT से, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू. नो, इट विल बी माई हैंड रिटन नोट्स. मैनी ऑफ यू वुड हैव सीन कि हैंड रिटन नोट्स का क्वालिटी कैसा है. यू प्लीज गो टू द स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ Navinomics ऐप एंड यू कैन चेक इट देयर. ऑल क्लास notes will be given. And in regular, what happened, after every 10 days, 12 days, we will pick up PYQ में mainly we will see HCU, JNU and CUET के paper. In between we will be doing PYQ, live discussion it will be. जैसे averagely क्या होता है, let me just write it. See क्या हुआ, suppose that you did questions or you studied market, तो हम तो topic wise quiz करेंगे ही, and in between what we will be doing, सिर्फ हम questions CUET के नहीं करेंगे, because I found in 2022 questions of CUET was very easy, and in 2023 it was easy to medium, not even very tough but medium level. So why medium level? Because this time few numericals were added, and little bit stats and maths question increases. Okay, maths and stats question, it was this time I think 20 plus. The last time it was nearly 10 to 12 in 22. So we will be focusing this stats and maths also. Now coming to here, then regular doubt session. Doubt session का मतलब यह हुआ कि suppose that today we have studied market में there will be like 5-6 classes. So after every 6 classes, then we will have
2 hours long doubt session in which you can ask any kind of doubt regarding subject specific, regarding topic specific, regarding numerical specific, anything. And numerical practice will be done, which will be based on CUET pattern. Complete practice we will be doing. And 1-to-1 guidance का मतलब यह हुआ, I will be available for you 24/7. Yes, you can text me anytime at my given Telegram ID, that is Naveen Navneet, and I will try to reply within 1 to 2 hours with full details. If you ask me even question of screenshot, I will definitely reply. As Ajay told ki sir, I don't understand this. Suppose that a term came, beggar than neighbor policy, and he is reading but he does not understand. What he will do? He will just take the screenshot what he is reading and will send me. I will give the full explanation. Or apart from this, I will be also providing 24/7 live discussion group on Telegram channel. We will have separate Telegram channel, people who will join the course, in which you can interact your friends. I will be also participating. I will be also monitoring in between. If I find any kind of problem, any kind of mistakes you people are doing, so I will interrupt and I will put my own comment also. Suppose that if you miss the live class, suppose that today you are attending live class and you cannot attend live class because of internet issue, because of family issue, because of travel and all. So you can access its recorded version. It will be available on our Navinomics app. ठीक है, Navinomics ऐप रहेगा हमारा, उस पर ये सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे विदाउट एनी डिले टिल योर एग्जाम. नो नीड टू वरी कि लेक्चर हमारा छूट गया, हाउ कैन आई एक्सेस दिस. ऑल लेक्चर्स विल बी देयर. ओके, नो नीड टू वरी. और यहाँ पर जो है आपको कोर्स को क्या करना है, यहाँ पर पे देयर विल बी ऑप्शन. वंस यू डाउनलोड द ऑप्शन, देयर विल बी जस्ट फ्यू कोर्स ऑप्शन, जस्ट यू स्क्रॉलिंग. तो यहाँ पे फ्री इकोनॉमिक्स बुक्स है, डेमो क्लासेस वगैरह, हियर यू कैन डू. बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू गो टू द 24 सेक्शन. इफ यू कीप स्क्रॉलिंग, यहाँ पे नीचे समवेयर यू विल गेट 24 बैच. वहाँ पे आपको जाके परचेज कर लेना है. अभी कोर्स ऑफर काफ़ी हाई चल रहा है. इवन फी इज लेस देन 4000 रुपीज़. इट इज़ नियरली आई थिंक 3600-3700 रुपीज़. You can get it, and for all these, this is the least I can do, because last year क्या हुआ था, it was very, I mean, less time, hardly 2 to 3 months का class हुआ था. Course fee was only 2199 rupees, where we don't have to pay app developer and all. So in fact, you people got benefited. For 15 months of course duration, you have to pay hardly 3600-3700 rupees, hardly. And for 22 batch, they paid 2199 rupees for only 3 months of course. Okay, so in fact course duration reduces, and we did not provide even mock test. So this time I am gonna add you topic wise mock test quiz also. So topic wise mock test quiz will be how, let me tell you. Suppose that we have done elasticity chapter. Okay, so elasticity chapter से whatever questions will be coming, 10 questions, 50 questions, there will be separate mock test, and mock test will start from end of July. In June and July we will focus on basic. We will also focusing on NCERT, how to build the blocks, क्योंकि हमें जीरो एरर पे काम करना है. एंड दिस इज लाइफ टाइम अर्निंग. यह नहीं है कि जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन CUET एंड ऑल. नो, CUET is just a medium. So let me share the syllabus. So far any doubt from any side? Shall we move ahead? Yeah, Ajay, sorry, Ayush. No sir. चलिए, सृष्टि, can we move ahead? Yes, sir. हाँ. Okay, Santosh is with us. Now coming to the books, topics and syllabus. Okay, तो syllabus is same. I think PGQ 44 है, now it is to 10. Earlier it could be anything, but syllabus is same and it will be same. हमारा book है, first है micro economics. In micro economics you have to just follow 3 things. First is consumer theory, second is producer theory, third is price theory. So for all these our class lecture will be more than enough, but it has to be supplemented by two books, H.L. Ahuja and Pindick Rubenfield. I will provide the PDF of all books, don't worry. Pindick Rubenfield. Okay, these 2 books for microeconomics, more than enough. And I would also suggest ki which page number or which chapter you have to read specific apart from my lecture. However, if you attend my lecture, that is more than enough, but books cannot be replaced by anyone's class lecture or coaching institute. Please trust me. You join either Navinomics or anywhere, books are the best friend, so please don't ignore the power of book. Next come macroeconomics. Macroeconomics mein we will not do only these topics. There are written just do 2 topics, national income and income output determination. No, we will also go beyond this. We will be also doing Keynesian में 2 types of Keynesian. एक तो traditional Keynesian, we will be also doing neo Keynesian. Apart from this, this macroeconomics में यहाँ पे लिखे हुए, we will start with the mercantilism. Here I am just writing what are the things we are going to do. So in micro we have seen
we are going to do consumer theory, CT. Then we'll be doing producer theory and market plus welfare. Okay, so these things. Then comes macro. In macro, we will start with the first mercantilism. Anyone has idea what is mercantilism? Anyone? स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स को इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स. तो मर्केंटिलिज्म वाज नॉन एज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स. दे टोल्ड अस अबाउट कि जीरो सम गेम, ट्रेड इज जीरो सम गेम. ऑल डिटेल्स विल टेल यू, डोंट नो नीड टू वरी. apart after mercantilism, then physiocrats came, then classical games, then Keynesian games, right? After Keynesian, then monetarist came. After monetarist, then new classical, and new classical is known as rational expectation theory. After that, we will have business cycle theory, then we will have new Keynesian. So we will see all theory, because this is not only specific to CUET class. So this will cover CUET, SAU, South Asian University, Jamia, and Madras School of Economics. And CUET is basically targeting, our target will be CUET encompasses of DSE, Delhi School of Economics, JNU, BHU, HCU, Pondicherry University, so many things, etc, all central university and all. Right now it has more than 90 plus universities. So we will be covering these all 90 university. SOU is independent from CUET, Jamia, and Madras School of Economics. So all things will be covered under this course. After the macro, we'll have the also money and inflation, and money and inflation का portion जो है वो macro में ही होगा. For macro only book H.L. Ahuja plus Froen, Richard Froen. All PDF book you will get in your inbox at Telegram, our closed Telegram group for 24 batch we will provide, no need to worry. Okay, तो H.L. Ahuja एक macro की book है, you can write it down, H.L. Ahuja and Froen. I am writing it here again. So far from the book side, here you just mention the books. Yeah, anybody has any doubt, you can turn off the mic and you can tell, no problem. सर हाँ प्लीज. एचएल आहूजा है सर, जो माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों के लिए आती है. जी तो हाँ. क्या दोनों में प्रीफर एचएल आहूजा ही नहीं, मैं चलेगा? बता दे रहा हूँ. यहाँ माइक्रो हो गया, यहाँ मैक्रो हो गया, ठीक है. तो माइक्रो में आपको एचएल आहूजा पढ़ना है, ठीक है, एचएल आहूजा. और मैक्रो की भी डिफरेंट बुक आती है एचएल आहूजा, 2 बुक्स. यहाँ पे एडवांस है, एचएल आहूजा माइक्रो एडवांस. Here don't have to read all the pages of book. I will tell you specific chapter apart from our class lecture. So, हाँ, go ahead. so can we prefer a whole variable? Yeah, I am coming to no macro. For whole variant, the important chapters are 1 to 6 chapters, and I will be covering here in class itself with class notes. Okay. For CUET हल आर वेरिएंट के लिए आपको सिर्फ 1 to 6 चैप्टर पढ़ना है till demand. After demand, no need to worry about हल आर वेरिएंट. All details, class notes, everything you will get. So we will be covering class. तो आप क्यों एफर्ट डालोगे? आपको जो पढ़ना है ये है. And Pindyck and Rubenfeld is very good. For market you can follow Kursianis also, but these 2 books are important. For macro H.L. Ahuja है, Richard Froen है. I am telling the number of books that you can follow, but basically we have to follow any 2. फिर आपके पास मैनकीव भी है, सोलो मॉडल के लिए we will be focusing मैनकीव. फिर उसके बाद डॉर्मिस एंड फिशर है, D&F, but you don't have to stuck in all those books, only H.L. Ahuja and Richard Froen. Now let's move to the next topic, consumption and investment function. Yes. Sir, any role of class 11 or 12 NCERT, especially for national income? ये सब तो इजी है, ये तो एक क्लास में आपका कवर हो जाएगा. ये आपको सेल्फ स्टडी करके आना है, ठीक है. सेल्फ स्टडी आप कीजिए. और अब हम लोग इसके ऊपर का शुरू करेंगे. आई एम कमिंग टू योर ऑल क्वेरी, डोंट वरी. कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द पार्ट ऑफ मैक्रो, सो दिस बोथ टॉपिक कुड बी कवर्ड फ्रॉम द H.L. Ahuja. ओके, नेक्स्ट कम्स स्टैटिस्टिकल मेथड. इसके लिए ओनली बुक है आपके पास गुप्ता एंड कपूर, और SC Gupta you can refer. All topics are very beautifully given. Then you have mathematics. So people who have done mathematics in class 12, no need to worry. Otherwise you can follow AC Chiang. However, so many books are there in the market.
There are Mehta and Madani, Sidister and Hammond, so many books. But A.C. Chiang, I found one of the very good book, very easy to understand for non-mathematics background. If you have mathematics in class 12, so you can follow these books for this mathematics book, and these topics are beautifully covered in either here or here, and we will be having class also. Now the main headache is here Indian economy, which has the largest syllabus, and 23 batch में more than 50 questions came. Okay, and I am happy to share majority of questions were directly from our CUET 2023 class lecture, even direct question. तो यह सारे टॉपिक के लिए I would simply say कि no need to read any specific book, our class lecture will be more than enough. But if you want to follow, either you can follow रमेश सिंह बुक और नितिन सिंघानिया, आपको स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स कितना हो गया, लिस्ट ऑफ बुक्स फ्रॉम योर साइड, दैट टू वेरी स्पेसिफिक, हार्डली 5 to 6 आपको पढ़ना है। तो HL आहूजा हो गए, HL आहूजा 2 बुक्स, राइट, यस, या वेलकम, हाँ HL आहूजा 2 बुक्स हो गए। देन कम्स टू नेक्स्ट बुक में आपके पास हो गए रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी के, राइट। देन यू विल हैव AC चियांग फॉर मैथ्स, आफ्टर दैट यू विल हैव गुप्ता एंड कपूर फॉर स्टैट्स। Last book is International Trade, and Bible of International Trade is Dominic Salvatore. And you are not supposed to read this book, you have to just be specific. तो hardly 6 to 7 books आपको पढ़ना है, that too in 12 months, that is more than enough, ठीक है। और यह बुक को आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। You see here it's completely written. In International Trade Theory, they are asking Adam Smith theory, Ricardo, Hexer-Ohlin, न्यू ट्रेड थ्योरी, दैट्स इट, यू हैव टू डू दिस ओनली। देन टैक्सेशन, हाँ पब्लिक फाइनेंस जो है, पब्लिक फाइनेंस वन मोर टॉपिक, मेनली दे आर आस्किंग इंडियन पब्लिक फाइनेंस, सो वी विल बी कवरिंग इंडियन पब्लिक फाइनेंस, एंड दिस इंडियन पब्लिक फाइनेंस आई विल बी हैव 2 lectures प्लस रमेश सिंह, दैट इज मोर देन एनफ। एंड बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास आई वुड सिंपली से कि you please go to the demo class lecture. Demo class lecture is available here. Here all details are given. You please download the Navinomics app, and here in study material section all the demo class, all the class notes are available there. Okay, and after watching the demo class, प्लीज़ डोंट टेक इट डिले कि सर नेक्स्ट मंथ ज्वाइन कर लूँगा, परसों ज्वाइन कर लूँगा, कोर्स फी कम हो जाएगा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। यू प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, डोंट मेक इट डिले टू ज्वाइन द क्लास, बिकॉज until unless we have a good strength we cannot start the class. And I am planning to, after the orientation class, from next week we will have regular classes. क्योंकि 1 week आपको मैं इसलिए समय दे रहा हूँ, by 1 week you will have brush up, and most of you would be knowing it, today is 6 June, तो 6 June को CUET 2023 बैच का एग्जाम है, so we have to discuss 23 पेपर also, cut off and all. So 1 week I am giving you, you please read just 2 books if possible. Class 11th and 12 के NCERT आप पढ़ लेंगे if time allows. If you are not able to study, no problem. माइक्रो की बुक है, मैक्रो की बुक है, एंड इंडियन इकोनॉमी की एक बुक है, ठीक है, फ्रॉम क्लास 11th and 12. एंड क्लास का जो लेक्चर होगा इट विल बी इन इंग्लिश मीडियम, 90% English, 10% sometimes I will use Hindi, because many people from Hindi belt, they are not fully comfortable with the English, but whatever I will be teaching you, it will be in 100% English. In class lectures, notes and everything will be English, there will be no Hindi, but for some usual purpose तो we can talk Hindi. हिंदी में 5-10% हम बात कर सकते हैं to make it more comfort. आपको किसी प्रकार का डाउट वगैरह हुआ तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं बात हमारे यहाँ पर इन क्लास के फीचर्स में, कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट, क्विज, टेस्ट सीरीज, यह सब क्या है। देखिए दीज ऑल आर सेकेंडरी, प्राइमरी थिंग क्या है आपका कंसेप्ट, कि क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जा रहे हैं सोलो मॉडल से, एंड इफ़ यू आर कंसेप्चुअली वेरी साउंड, क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं हेरा डोमन मॉडल से, इफ़ यू आर कंसेप्चुअली वेरी साउंड, इवन इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस दैट मच मॉक टेस्ट, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। तो फर्स्ट आवर बेसिक विल बी कंसेप्ट्स, थियरीज, इट्स ऑल बैकग्राउंड, देन वी विल जंप टू मॉक टेस्ट। नाउ कमिंग टू द क्लासेज, कि क्लासेज कितने होंगे, क्या होंगे, ठीक है। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी ऑफ 1 hour to 1.5 hour अकॉर्डिंग टू द नीड, 1 to 1.5 hour, 1 hour तो मिनिमम होगा, इट कुड बी लाइक 70 minutes to 90 minutes एज मच, ओके। एंड क्लास विल रन 3 days per week, 3 days per week। ये कुछ इस तरह से होंगे, यूजुअली मैं भी लिख दे रहा हूँ, इट वुड बी टेंटेटिव इन नेचर, बिकॉज एज पर नीड वी कैन इंक्रीज 4 क्लास और 5 क्लास ऑल्सो। जैसे आपका मंडे को क्लास हुआ तो नेक्स्ट क्लास आपको होगा वेडनेसडे को,
फिर नेक्स्ट क्लास होगा फ्राइडे को. Okay, class time will be 9 p.m. Why I have kept 9 p.m? So that ki you don't miss college lectures, you don't miss. Some people will be joining in office and all. You may not be believing, in 23 batch at least 6-7 people joined. One people to joined who was advocate in Hyderabad, and rest 5 people joined working in MNCs. So they told ki sir, how can I take your live class? That's why we have kept 9 p.m. Even if you come from office, you can take 9 p.m. live class. And more of that, if you are unable to join live class, you will have recorded lecture within 24 hours of that live class. Recorded lecture will be available on our app. Okay? Any doubt so far? Please ask. No, sir. Sir, So I have one doubt. Yeah, sure. So in your recent video, you were stating about 2 papers set by CUET. Can you please? Yeah. 2 papers set Say by it. CUT. That is 2022 and 2023. In 22, what happened? There were just one shift of exam. Okay, one shift, one day, one time. In 23, what happened? There were some technical glitches and they have kept it 2 shift. Around 60 to 70% student का exam जो था, it was on today. That is on 6th June. And nearly 30% का जो exam होगा, okay, nearly 30% का जो exam होगा, that will be on the next week. So that's why I told in 23 CUET has kept 2 shift, and paper of nature of paper will be decided by NTA and it will be at par of syllabus. No need So to the worry. paper will be same or the paper will be No. different? Obviously different ना. If it will be same तो paper 2 के बच्चों को तो पूरा 100% आ जाएगा. Got it? Paper would be different. Syllabus will be same. Okay. Okay, sir. So the people who are sitting for the shift 1, they Yes. can't sit for shift 2. No. Simple. Okay, sir. Or Thank or you, sir. or see, next time it will not be the same because this time technical glitches was there. Because of Okay. that we have to do. Okay, sir. Thank you, sir. तो आप लोग अब यह बताइए फ्रॉम योर साइड. आई एम एज्यूमिंग 2-3 थिंग्स. आई एम एज्यूमिंग कि बेसिक मैथ्स यू शुड नो. बेसिक मैथ्स एटलीस्ट 10-11th लेवल का बेसिक मैथ्स यू शुड नो. yeah. बेसिक इकोनॉमिक्स यू नो. बेसिक इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ, सपोज दैट इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम, सो दिस डायग्राम यू कैन से कि सर इट इज डिमांड डायग्राम एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्लियर? दिस बेसिक. आई एम प्रिज्यूमिंग बेसिक, नॉट बियॉन्ड बेसिक. तो इसके लिए No, बेसिक, sir. हाँ, बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग. इफ समबडी आज इंटरेस्टेड, यू जस्ट परचेज जैन एंड ओहरी बुक. प्लीज फिनिश इट इन 10 days. Okay, I am giving you 7 to 10 days. After 7 to 10 days, we will have regular classes 3 days per week, and it will run 1 hour, 1 to 1.5 hour, 9 p.m. The time and everything I have already. Why basics are important? Because if I speak something economics word, technical words in speed, I may not focus sometimes, so you can understand. And apart from 24 course, you will be provided all free lectures so that कि you can think कि सर ने हमारे साथ बेईमानी नहीं की है of 2023 बैच. Okay, 2023 बैच में जितने भी लेक्चर हुए हैं, around 40 lectures are there. It was of 2 hours. Okay, so that's why it become 40 lectures. तो but in 1 hour we will have nearly 100 plus lectures. No need to worry. And more detail में हम लोग करेंगे. तो इन दिस कोर्स पैकेज यू विल बी प्रोवाइड 24 बैच तो लाइव चलेगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री 23 बैच यू कैन ऑल्सो एक्सेस सो दैट कि यू कैन जज, एंड इफ आई मिस समथिंग इन 24 यू कैन गेट इट सप्लीमेंटेड फ्रॉम 23 ऑल्सो. ठीक है? अब बताइए आप लोगों को कोई डाउट रिगार्डिंग क्लास, सब्जेक्ट, कोर्स, एनीथिंग फ्रॉम माई साइड? आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू पीपल. Sir? हाँ बोलिए, गो अहेड प्लीज आस्क. सर दो चीजें थी. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ, यस यू आर ऑडिबल. सर पहले चीज की क्या मतलब जो बोर्ड है सर. Your sound is not audible. Can you just make it clear? Yeah. I'm मैं unable. कह रहा था हाँ बताइए. कि क्या If possible, can we speak in English because we have some South Indian people also, so they can also understand. Okay, sir. Yeah. So if any possible for you, can you use a digital board for teaching? Digital board is not possible, at least for this year. If you people are kind enough, hope you understand my meaning. If you people are
काइंड एनफ इफ यू पीपल आर आई एम ब्लेस्ड विथ फ्रॉम योर सपोर्ट, तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन और फ्रॉम दिसंबर वी कैन हैव डिजिटल बोर्ड। आपको पता है डिजिटल बोर्ड की कीमत क्या है? फॉर गुड डिजिटल बोर्ड यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। एंड उसके अलावा भी आपको कॉस्ट चाहिए, सेटअप चाहिए। राइट नाउ आई एम HCU स्कॉलर, आई एम परसुइंग PhD एंड आई एम स्टेइंग इन हॉस्टल जिसमें रूम का साइज है 10x12 रूम साइज, तो यू कैन थिंक ऑफ। But trust me, you won't get a kind of feel कि हमें डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया गया है, बट यू ट्रस्ट मी, यू विल गेट क्वालिटी एजुकेशन। आपको किसी प्रकार का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा। अब ये बताइए, मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँ एंड आई कैन नॉट प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑन डिजिटल बोर्ड, सो विल इट बी फेयर? What you people think? No, sir. So yes, quality is more important. Okay, quality is important. And I am very friendly, no need to even hide anything. You can share anything regarding anything, your own background, your future plan, your any kind of doubt. Don't hesitate. I am your friend only 3-4 years older to you, that's it. ठीक है? You can ask your any doubt. Second चीज, if any doubt, मतलब क्या होता है सर कि क्या कोई छोटा सा डाउट हो गया हमें, अब वो मैं हिंदी में समझना चाहता हूँ, तो क्या वो आप प्रीफर कर सकते हैं? Obviously you can ask me anytime in box। और क्या होता है, सी आप मेक श्योर करें फ्रॉम योर साइड, इफ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर फ्रॉम बुक्स, थिंग्स आर गेटिंग क्लियर फ्रॉम इंटरनेट और यूट्यूब, तो इससे क्या होगा कि यू वॉन्ट डिस्टर्ब मी ऑलवेज। हाँ, इससे क्या होगा, आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, यू विल इन्हांस योर कैपेबिलिटी, दैट मीन्स कि यू विल अंडरस्टैंड द स्किल यू कैन डू ऑन योर ओन। From your side, if things are not getting solved, there is 24/7 live discussion portal where you will have students. I am expecting कि last time हुआ था total 220 plus student in our live batch. That too I started in February January. So I am expecting कि अगर this time भी अगर 200 plus भी हो जाते हैं, तो you can post query in the group and people are kind enough to help you. And if nothing is getting solved, I am with you. Got it? आप मुझे inbox करें, I will reply you. और सबसे बढ़िया मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वीकली वी विल हैव लाइव डाउट सेशन। इन लाइव डाउट सेशन आई गिव यू फ्रीडम टू आस्क यू एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स। यू आस्क मी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैक्रो एनीथिंग। दिस विल बी लाइव डाउट सेशन एंड इट विल बी ऑफ वीकली और मैक्सिमम 10 डेज पे। मैक्सिमम की एक टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे, देन वी विल हैव डाउट सेशन। ठीक है सर, एक चीज ऑनलाइन क्लासेस का एक ड्रॉबैक मैं बताना चाह रहा था। यस हेलो, यस यू आर ऑडिबल। इसमें क्या होता है कि इसे हम इंटरेक्ट टीचर से नहीं कर पाते हैं। यस, सो माय my request is, but you can do with me. You ask to your seniors who joined 23 batch. I give my student 24/7 access. You can contact me anytime. My Telegram ID is here, and within 1 hour I reply. Naveen. You can call me even. Call me direct. That is the beauty of my class lecture. Okay, you can interact me. You can video call me. You can video call on WhatsApp even. ठीक है, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू। दिस मच फ्रीडम आई लेकिन मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन था कि इसे कोई टॉपिक चल रहा है क्लास में। ओके, तो सर टॉपिक चला, उसमें कुछ कोई वर्ड या कुछ समझ में नहीं पाया, तो सर क्लास के बीच में वो अब वो करना, इंटरप्रेट करना वो सही नहीं लगता है। यस, हाँ, गॉट इट। बट आई अलाउ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इंटरप्रेट, आई अलाउ, लाइक आई एम अलाउइंग यू टुडे। गॉट इट? अदर पीपल आर लिसनिंग, तो यू शुड बी हैव डिसेंट, अदर का टाइम कंज्यूम ना करें। गॉट इट? सो हैव डिसेंसी। जो आप एप्लीकेशन, ओके सर, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स सर, उसका मैं सॉफ्टवेयर देखा था, तो उस पे ऐसा वो कंपनी के थ्रू से ऐसा। नो आई विल अलाउ यू, डोंट वरी, एवरीथिंग इज इन माय हैंड, डोंट वरी। उसमें भी है कि आप उसमें भी लाइव। हेलो, हाँ, यू आर ऑडिबल। आई विल अलाउ। उसमें क्या है, उसमें भी वो होता है कि आप लाइव एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में ऐसा मतलब ऐसा है, तो ठीक है। अपने देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इधर उधर के चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है। 2 things I made you very clear. I am available 24/7 and you can ask any live doubt any time in the class. Srishti, any doubt from your side? ओके। No sir, no sir. हाँ, किसी और के पास? जो बेसिक बुक बताए थे उसके नाम बता दीजिएगा। हाँ, एक बार मैं बेसिक बुक बता देता हूँ। सी, people who is already pursuing graduation and all, and no problem, but people who is from non economics background, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार ओहरी एंड जैन, ठीक है, 11th and 12th के CBSE बुक है,
ओरी एंड जैन की आप लोग एक रीडिंग लगा लेंगे, हार्डली इट विल टेक 1 week. Okay, and then we'll start. Now let's look at how we will proceed the course. That is the last thing usually I tell to my students. And you will be my 4th batch. I've been in the field for 2020. However, application and long batch was not there. Then in 21 we had few selections. There we had only 14 students. Some of them are in Pondicherry, some are in HCU. I meet them daily, and one is in JNU. I think you might be knowing her. One reels I also uploaded. And let's wait for the 22 and 22 are there. Let's wait for the 23 result. I am expecting कि 23 में कुछ बच्चे JNU जाएंगे, कुछ बच्चे HCU जाएंगे, and I have high hope from few girls for the DSE. 2-3 girls are very smart from our batch. But as soon as batches improve from 24, I have more expectations from you people, and you people got almost 1 year of time. I have never taught 1 year, hardly 3 to 4 months, because that is the real syllabus of CUET. बट 1 year आप लोग पा रहे हैं, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, मैं रिक्वेस्ट यह करूँगा. तो चलो, नाउ वी विल सी कि हाउ टू प्रोसीड द कोर्स. वी विल स्टार्ट विद द मैक्रो क्लास. ठीक है, देयर विल बी फर्स्ट मैक्रो क्लास. मैक्रो के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक. द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स विल बी कि नॉट ए सिंगल टॉपिक विल बी लेफ्ट. ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ लेना खुद से, आप यह देख लेना यूट्यूब से. आई हैव सीन इन मैनी क्लासेज, मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और इन इवन द कॉलेजेस. ठीक है, ये कर लेना, ये बुक से. नो, इन माई केस नॉट इज दैट. I can tell you कि you please read it first, you please read it demand, you please read it production theory from your side. But today, tomorrow or some other day, I will definitely finish 100%. There will be no any compromise. ठीक है, तो first thing is that. Next thing is that after macro, then we will do growth and development, because both are associated. ठीक है, after macro, growth and development, then we will cover Indian economy, because Indian economy is very very lengthy, and in between I will be keep telling you कि which chapter you should read micro plus stats. ठीक है, I will just telling you, if you have enough time so you can pursue that also. Micro पढ़ लेंगे आप, साइड से स्टैट्स पढ़ लेंगे, but from my side this is the chronological way I will prefer. Macro, this growth and development, Indian economy, then we will start microeconomics, because it is very lengthy. Microeconomics. After microeconomics, international trade, and after international trade, maths and stat. Sidewise, I would say, and I request you to avoid the fear of examination. Maths and stats के आप लोग sidewise at least weekly 1 hour, even weekly you give 1 to 2 hour ना, practice करते रहें according to syllabus. I will send you all the PDF books, no need to worry. And this class lecture क्या होगा, after every doing the topic, suppose that today we have done consumer theory. After consumer theory, within 1 day, there will be a mock test on the Navinomics app, mock quiz from consumer theory. There will be few set of questions. It could be 2 to 3 sets. There will be 10 to 20 questions in every set. So there you can practice also. And उसके explanation, अगर आपको कोई doubt होगा तो उसके explanation जो है next जो है live class में discuss किए जाएंगे. ठीक है, तो यह पूरा हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है. एंड एट मैक्स आई एम टेलिंग यू बाय एंड ऑफ जनवरी आवर 24 का बैच फिनिश हो जाएगा. देन यू कैन डू रिविजन सेशन, यू कैन डू PYQ, यू कैन डू वट एवर यू वांट. क्लियर, क्योंकि होता क्या है, लास्ट जनवरी में बहुत सारे बच्चे IIT वगैरह का तैयारी करते हैं. IIT जैम वगैरह भी आ गई है, तो मैनी पीपल प्रीफर देयर. तो IIT जैम वगैरह का भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. एग्जाम जनरली हैपेंस इन February, सो यू विल हैव एनफ टाइम. और IIT जैम में भी CUET के 50% से तो आते ही, माइक्रो आते हैं, इंडियन इकोनॉमी आते हैं, तो वह सब आपको हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, तो CUET का हमारा यही है टारगेट, CUET का हमारा यही है सिलेबस. और CUET ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, सो मेक श्योर यू प्लीज़ वॉच द डेमो लेक्चर्स. के बाद में आपको यह डाउट नहीं रहा कि सर आवाज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, सर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, सर हिंदी नहीं समझ में आ रही है. मैनी पीपल हैव, however not as I think one people have complained like this कि sir I am unable to understand your English. क्योंकि कुछ लोग आते हैं हिंदी बैकग्राउंड से. आई थिंक ही वॉज फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन जो किया था BA फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट somehow he tackled and now he is with us. So no need to worry, things will be very smooth. And consider me as your friend, don't consider me teacher, faculty and all. I am your just friend. And people who have joined late, you will get the recorded lecture of this session of 1 hour of recorded lecture. In between, if anyone has any doubt, last 5 minutes I am taking the doubt. And the beauty of class is that after the end of class, suppose that 1 hour we took the class, okay, and after 1 hour of class,
10 minutes you will get daily doubt session. You can ask anything. Anything means anything. Yes, anything. Not any related to economics. Many people are unable to understand कि सर रसिया यूक्रेन क्राइसिस क्यों हो रहा है. You can ask that also. सर बजट डिफिसिट हमारा क्यों बढ़ रहा है. You can ask that also. Anything means anything. Trust me. ठीक है. और सबसे जो बढ़िया क्लास होगा फ्रॉम माई साइड, व्हाट इज माई फेवरेट क्लास, मैं अपने आप को तो जज नहीं करूँगा, बट ट्रस्ट मी you will enjoy almost all the class, especially microeconomics, macroeconomics and Indian economy. Please don't miss these classes. I can bet you will never get this kind of quality lecture, especially Indian economy micro वगैरह के, because this will go beyond. And if you attend this lecture after joining masters, these lectures will be helpful for NET JRF also. NET JRF आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा if you are attending this class. ये सारे जितने भी टॉपिक देख रहे हैं या सिलेबस, ये हम सारे कवर करेंगे. इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली और ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. होप आई एम ऑडिबल? यस सर. हाँ, इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली जो है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे. एक हमारा पार्ट होगा सेक्टर वाइज, एक होगा हमारा पॉलिसी वाइज. ठीक है. पॉलिसी में हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. एंड सेक्टर वाइज होप एवरीबडी नोज, that is primary sector, secondary sector, tertiary sector, that is agriculture, industry and service sector. यही 5 पिलर पे आपका एंटायर इकोनॉमी खत्म हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन February we will have extra session on budget when budget will be released in 24 and economic survey. ठीक है, we will have session on budget and economic survey also. So no need to worry about this. And for all the books, for all the topics I have already told the books. इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको बुक्स का नहीं पढ़ना है. आई विल सेंड द क्लास नोट्स एंड सम मार्केट में भी कुछ मटेरियल है. आई विल सेंड दोज ऑल्सो, बट क्लास लेक्चर्स, क्लास नोट्स, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड रमेश सिंह यू कैन प्रीफर. हाउएवर इफ़ यू हैव टाइम तो आई वुड से कि मिश्रा एंड पुरी आप लोग पढ़ लें. मिश्रा एंड पुरी इज़ वेरी गुड बुक. मिश्रा एंड पुरी एंड रमेश सिंह, दीज आर मोर देन एनफ. मैथ्स के लिए हमने बात कर ली, क्लास 12 एंड AC चियांग. स्टैट्स के लिए गुप्ता एंड कपूर. फिर मनी, मैक्रो एंड ऑल HL आहूजा. For microeconomics also HL Ahuja, Varian and this Rubenfield. Clear? चलो last again as usual I give 5 to 10 minutes is yours. You can ask any doubt. Go ahead. सर हेलो. Yeah. पार्ट ए में जो मैथ आएगी वो कौन सेक्शन से आएगी ना? वो काफ़ी काफ़ी इजी. इट विल बी क्लास 10th लेवल. उसको मैं गाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना. RS अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लोगे आप, हो जाएगा. पार्ट ए के बारे में सोचना नहीं है. Till January don't even think of part A. Don't even think. वो क्वेश्चन देखे थे, वो सॉल्व हो गई थी, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गई थी. वो इजी रहती है. तो आई रिक्वेस्ट अदर पीपल टू आल्सो आस्क द डाउट इफ यू हैव. गुप्ता जी ने सारे सवाल आई थिंक पूछ लिए. या लास्ट क्वेश्चन प्लीज. या लास्ट क्वेश्चन कैन आई? या श्योर गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन. सर ओरिएंट जैन का जो बुक बताया सर, उसमें हाँ. को मतलब 2-3 बुक आती है ना, माइक्रो का, मैक्रो का. नहीं वो कंबाइंड करके बुक आएगी. आपको अल्टीमेटली माइक्रो एंड मैक्रो का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं ना. दैट्स व्हाई. अदरवाइज इवन NCERT इज एनफ. NCERT 11-12 का एनफ है. बट इफ यू अटेंड माई क्लास एंड इफ आई प्रिज्यूम की बेसिक इकोनॉमिक्स यू नो, तो यू डोंट इवन रीड टू दीज थिंग्स. यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद पिंडिक रूबेनफील्ड, HL आहूजा एंड माई लेक्चर्स. क्लियर? हाँ बताइए. बेसिक ही प्रॉब्लम है सर, इसी कारण से मैं बोल रहा था. नहीं वो आप पढ़ लो. बेसिक जिसका प्रॉब्लम है ये आप 1 week to 10 days में पढ़ लो, हो जाएगा. हाँ, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? Sir, I was asking, can we prefer Lucents for Indian economy? लूसेंट वो तो MCQ टाइप का है. Okay, sir. See, I would say you people have actually not joined. I would say 23 बैच के जो हैं आप 2-3 मेरे लेक्चर देख लो. You will fall in love with the Indian economy and forget all the bigs. The way I teach na, you will fall in love with Indian economy. No need to worry about Indian economy. Okay, sir. And you can contact me anytime on Navi Navneet, Navi NVI NAVEET for any content, any material, any demo, anything before you join the class. Or Sure. as soon as you join the class, we will start batch from next week, and I will update on the Telegram. We will have 2 things. One, we will have Telegram separate group 2024 के लिए, and another group already we will have on Navinomics app. ठीक है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड सारे अपडेट वहीं पे दिए जाएंगे. ठीक है, देन कैन वी साइन ऑफ? Hello, sir. हाँ. Yes, sir. Good evening, sir. या
Sir, I have put my query in the chat box. If you could see it, please. Just a moment, I have to see information. Just a minute. Yeah. I can see chat of Santosh. How was today's CUT paper? Yeah, CUT paper I will discuss. Yeah, you can turn off your mic. I cannot see. Yeah, one mess. Yeah, Ahmad. Yes, sir. Yes. Yeah. Sir, how is the book Economics by Samuelson adapted by Sudeep Sudhi? One of my favorite book. I have been reading macro. Yeah, that is the best book I can see, but many of people cannot afford and hard copy is not available. To be very frank, this is my all-time favorite book. Samuelson wala. Very colorful and very good book. Yes, someone can prefer. And people can also prefer this. There is a Principle of Economics books by Mankiv. That can be also preferred. Very good book. Yeah, hope I took your query. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, that is one of the best book. But people are looking for shortcut. Na, hope you got my idea. So shortcut में क्या होता है? You prefer Indian writer books. Yes, sir. But the concepts and the basics are given very clearly and in a very easy language. Yes. तो देखिए क्या होगा CUET 2022 and CUET 2023. Okay. So today's paper discussion let us do. क्या हुआ? What happened? Generally, what happens? We follow the pattern of past year. In 22, paper were very theoretical in nature. So we did our best according to the theory. In 23, there were mix of quant also and theory also. क्वांट में क्या हुआ? स्टैट एंड मैथ्स के थोड़े पोर्शन बढ़ गए एंड इंडियन इकोनॉमी के स्टेटमेंट वाले सवाल बढ़ गए. क्लियर? तो व्हाट विल बी आवर अप्रोच? तो आई वुड सजेस्ट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 24, you should take the combo of both. Take the theory portion from 23 and take the limit and the toughness of 23 कि कितना टफ पेपर आ रहा है. In 24 batch you can proceed. I found questions in 23 paper which happened on 6 June, that is today. Many questions were directly from, I don't want to show, I will send you the screenshot of class lecture and all, but I am very poor in marketing. Directly around 25 direct questions came, even paper is tough, in 75 questions. And many more than 10-20 questions came indirect. But direct questions are coming from your, exam, NTA exam. You can think of ki there is no any problem with the quality of education, class and notes. Direct, yes my dear friends, direct. If I teach, these things are coming. One question directly came from like old man जो कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी. Okay, दादा भाई नौरोजी was book. Can someone tell the book name? Un-British Rule in India. Poverty and Un-British Rule in India. So such kind of many questions came. Book का आया, फिर I taught RBI, फिर I taught budget line वाला numerical. Then I taught Cournot का equilibrium model, Cournot model in oligopoly. Okay, so there numericals or theory question also told. Then Phillips curve directly came from our lecture, and few schemes also we discussed. So many questions directly come. I don't want to show you people because you people will be not interested, even no need to get interested. But if time comes, once question paper will be out, because in DBT mode, in online mode, what happens, until unless you get the answer key or the result, you cannot get the copy of answer key. So far we don't have copy of question pattern, but people who took the exam, they only told ki sir these questions came, and we have almost list of 20 to 30 questions from our class. And this time I am targeting कि हमें अलग बुक पढ़ना ही नहीं पड़े, एंड मोर देन 50% गुड क्वेश्चन डायरेक्टली कम फ्रॉम आवर क्लास, डायरेक्ट, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम 1 year. ठीक है, तो हमारा यह टारगेट रहेगा. एंड आई प्रिज्यूम कि यू पीपल लिटिल बिट जस्ट पुट एफर्ट. व्हाट एफर्ट यू हैव टू पुट? जस्ट व्हाट आई टेल यू. नो नीड टू डू दैट बियॉन्ड. एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट योर criticism, your constructive criticism. ठीक है, if any kind of improvement is required, you can definitely reach out to me. Don't hesitate. Don't think कि सर क्या सोचेंगे, मैं क्या बोलूँगा, मैं डांट दूंगा. No, I be never kind of person. I will be always available to you 24/7. हाँ, but given that कि आप लोग repetitive question ना पूछें, childish question ना पूछें, if things are very available on internet, if things are already discussed in the class, please look at the class. Then you come to me, I will be always with you. ठीक है, तो यह है क्लास डिस्कशन.
एक बार आप इसको पढ़ लें. दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड इन CUT 24 बैच एंड आई रिक्वेस्ट यू you join any class. I am not forcing you to join any class. 3 things you should make it clear. कि whatever fee you are paying, is it really justified? Who is teaching you? From my side, I must tell you कि I have appeared in 2 times IAS interview, that is Indian Economic Service UPSC. 2 times I have qualified JRF. Right now I am pursuing my PhD from University of Hyderabad. I am in 3rd year of student. ठीक है, इतना चीज़ मैं बता दिया. हाँ, 3 things what I tell you कि what is the fee. Like if fee is very high and if same quality things are available, तो you should be rational. एक तो ये हो गया. एक हो गया कि फैकल्टी कौन है आपके. Who is your faculty? Is faculty quite qualified enough to teach you? And third thing is that कि before joining the class, are you really getting demo lectures? Not one. माइक्रो के, मैक्रो के, स्टैट्स के, डेवलपमेंट के, एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज इट हैपेंस, इट इज़ वेरी ट्रू. सम पीपल मे बी वेरी गुड इन माइक्रो, okay, some people may be very good in macro, but some people may not be good in Indian economy. So if you are putting your effort, if you are putting your money, if you are putting your time is most precious यार. 1 year आपका बर्बाद हो जाएगा. Try to understand. So make sure you should be very good in every subject, then only you join. Because CUET this time is not giving any kind of relaxation. People, this Indian economy na, take it for granted. This time 20% questions came directly from Indian economy. That is more than 15 questions. And that is well enough. I have seen in many of coaching fees 50,000, 60,000 and they provide just class notes. They are not interactive. Why class notes? First you should take lectures, then class notes. And my always goal is affordable and effective education. I will never charge very high fee. Though I know my quality, my students should tell the quality, the way I put effort behind the students. No any teacher put their time behind the student. They keep assistant, they keep you meet me tomorrow, you meet me tomorrow. No, I provide you 24/7 assistant once you join the course. This is my trust. ठीक है, I will never deceive you. This is 4 years of guarantee. And before joining the course, again and again I will say, you please cross check the authenticity of faculty as well as the coaching class, including my, that is Navinomics. Please be transparent, be loyal, and I wish you all the best. I hope you people will work very hard. And one request I would say, please save your friends. I should not say in 23 batch what happened, more than 12 students joined after finishing. Actually what happened, by January most of the coaching institute finished the class. So after investing 40,000, 50,000, then they came back to me and joined. They joined Navinomics and they said, sir, I could not understand anything. Is it possible to clear economics entrance in 2 months? And somewhat they are lucky enough, finally they are up to the mark, getting very good marks in CUT score. So this is the story. So please save your friends also, if your friends are near to you, and if you are wishing to join, so please tell them, because once our class will be running from next week, so it will smoothly go 3 days per week and 1 hour, that is 9 p.m. So that's all. And this topic, all these topics will be covered. This topic complete, not a single topic will be left. Promise, I promise you. You keep it for the recording and please let me know कि सर आपने कहा था यह टॉपिक करूंगा और आपने यह टॉपिक नहीं करवाया. Syllabus is 100%. See, if you cover the syllabus, you are covering 100%, but we will be covering 110%. 110%. Because there are few topics in growth and development which is not properly mentioned. And in 22 questions were asked. Question were asked from unbalanced growth theory. Question were asked from Kuznets curve. Question were asked from Asian drama, which was given by, who gave Asian drama book? Who wrote? Any idea? I think no idea. Gunnar Madran. So these things will be covered in the class. Okay, we will cover 110% of syllabus. Syllabus ke beyond, what are the other supplementary area that can be asked? So these things will be covered. Chaliye, I think it's almost 1 hour and it's time to take break. और आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे. ऐप दिया होगा नवीनोमिक एप्स, लिंक इज गिवन बिलो. यू डाउनलोड एंड क्लास एक्सेस विल बी देयर. एंड रिगार्डिंग एनी क्लास डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन द Naveen Navneet. And I will also attach the phone number in the link below in Telegram. That is controlled by Navinomics team. Actually we have 2-3 friends, they are controlling the things. So that's all. Few people joined very late. People who joined late, they can ask your query. And you will be provided this recorded lecture so that you can make a whole idea कि कौन से बुक पढ़ना है, क्या टॉपिक है, क्या हमारा क्रोनोलॉजी रहेगा, how we will be covering the class, क्या क्लास टाइमिंग रहेगी, क्या हमारा अप्रोच रहेगा for 24. ठीक है,
Then shall we put off? Any doubt? Just a moment. Hope I am audible, guys. Hello, sir. Yeah, go ahead. Ask your doubt. Sir, actually, I have one more doubt. If you could clear it out. Yeah, sure. I am Sir, open to actually, I was saying I'm in my second year of graduation. Like I've completed it, and Okay. now my final year is left. So, sir, I wanted to know, like, if it is possible to prepare for CUET and simultaneously like give my semester exams. Like, is it manageable? Yes. Very, very manageable. See how it is manageable. Suppose that today you have semester exam, so 1 week you no need to watch lectures. You can watch it in recorded lectures. Okay, क्या हो रहा है ना? We are taking just 3 days class. So 1 week, suppose that you did not watch the live class, you did not attend the live class because of your semester pressure. So you can manage it next week because recorded lectures you will be provided, and you watch it in the sequence way. I will provide a recorded lecture in the class wise, sequence wise, topic wise. So no need to get haphazard. It is quite possible. And after watching the lectures, even if you get any doubt, you can ask me. Even the previous recorded lecture, if you have any doubt, you can ask me. Clear? Yes, sir. So Okay, it is thank quite you, sir. manageable. कोई टेंशन नहीं है. And people who are in second year, they have very good advantage, because what people think ना, we will go to the third year at the end of last semester, then we will join. By that time you are in the panic mode. Semester देखना है, course details देखना है. यहाँ क्या करो आप, till December you finish your course, and after finishing the course you can focus both. Your semester में CGPA you can score high, as well as you can score very good in CUET. Clear? Yes, sir. Sure. Okay Thank then. you, sir. हाँ, okay Srishti, then any doubt? No, sir, no doubt. No. Chaliye. Thank you so much. Okay, sir. See you in the next class. I will update the next class detail on the Telegram group. We will have separate Telegram group before joining the group, and who will join the group automatically, one Telegram group will be generated. Go to the Navinomics app, download the app, join the class, course details and everything I will provide in the Telegram group, the group which I send the lecture. Okay? Then bye bye. Good night, guys. See you. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.